हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आई एम बैक विद अगेन प्रोग्रेसिव मैगजीन। जनवरी की हम करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बोला था कि हम स्किल टेस्ट की प्रैक्टिस भी करेंगे और आपके कोर्स के एग्जाम आ चुके हैं। तो अब आप लोगों को जो प्रोग्रेसिव की प्रैक्टिस है वो भी करनी चाहिए विद केसी, ठीक है। तो आपके 110 की वहाँ पे स्पीड आएगी, तो मैं पूरा ट्राई करूंगी कि फ्लक्चुएशंस के साथ 110 की स्पीड आपको दूं। कहीं पे स्लो, कहीं पे फास्ट ऑब्वियसली रहेगा, क्योंकि फ्लक्चुएशंस है तो वो रहनी भी चाहिए। ऐसा ही होता है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बार से मैं मैटर्स वगैरह भी लेकर आऊंगी, अगर मुझे प्रीवियस ईयर मिल गए तो, नहीं तो अभी तो हम प्रोग्रेसिव कर ही रहे हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं डिक्टेशन थोड़ी ही देर में। मैं आपको डिक्टेशन एक बार दिखा देती हूँ, और अगर आप चाहो तो इसको मुझे टेलीग्राम पे भेज भी सकते हो अपनी परीक्षा पे, ठीक है। ये आपका मैटर है। स्टार्टिंग द मैटर इन 5 seconds. Start. Mr. Speaker, sir, a week ago I returned to Delhi after visiting many countries and many great cities in the West and meeting many leading personalities. I tried to understand the great movements that were taking place there and the thoughts that were passing in the minds of people. Even more so, I tried to understand what image there was of India in the minds of the people I met in Europe. Even I watched something of the stuff of history being made in Europe. I wanted to know how far the history we might be making here was reflected in the minds of the European people. I found they were greatly interested in what was happening in India because they felt it was something very significant, something that would not only change India but affect other countries and continents. From that distance, I thought of our work here, of the great problems that face us, and the responsibility of this parliament in making the history of India. Another thought that struck me as I traveled from country to country was how the old frontiers gradually had less and less meaning. Within an hour or two, I traveled from the capital of one great country to the capital of another. It seemed to me that despite the many unsolved problems and conflict, the idea of natural frontiers had become less and less important in the modest scheme of things. I mention this because here we are considering with great heat and passion not the frontiers of nations but the borders inside the nation between two states or provinces. If the frontiers of nation have become relatively less important than they were, and if in the course of a few years they may almost be ignored for many matters, how less important are these problems of state boundaries which are considering? I do not wish to underrate their importance, but I do wish this House to consider the question in a proper perspective. We are apt to lose that perspective in the heat of the debate. I know that this question and this bill and its provisions have moved people strongly and deeply, and that even now there is a great deal of feeling about them. I do not suppose that the most ideal of solutions could possibly have been pleasing to all one parts of the dispute. Stop. सो गाइज, इसी के साथ जो मैंने आपको डिक्टेशन दी है ये है आपकी एक्सरसाइज 1, और आप इसको जरूर एक बार लिख के मुझे भेजना, ठीक है। भेजने के लिए आप अपनी परीक्षा पे ज्वाइन हो जाओ, वहां पे मैं बता दूंगी कि आप लोग कैसे मुझे भेज सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम पे डायरेक्टली सर्च करो DISHA1400 दिशा 1400, उस पर आप भेज सकते हो, क्योंकि मैंने आपको डिक्टेशन लिखवा दी है। कोर्ट में ऐसी ही कोई डिक्टेशन आएगी 500 वर्ड्स की रहेगी, धीरे धीरे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए लाइक सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप बताएं आपको कौन कौन से मैटर चाहिए, ठीक है। आप शेयर वगैरह कर सकते हो। बाकी अपना ध्यान रखें। टेक केयर।